In this video, we will discuss about the comparison of solutions, suspensions, and colloids. So, solution. What is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more components. This is an example of true solution. Each component is mixed in such a way that these components cannot be identified easily. The simplest example is the salt solution. You cannot differentiate between the solute and the solvent. They are mixed in such a way that they form uniform mixture. Its particle cannot be seen with naked eye. They cannot pass through the filter paper during filtration. They don't settle down at the bottom of the container if allowed to stain even for longer time. So you can say that a solution is a homogeneous mixture of two or more components. Say this solution is a homogeneous mixture of two or more components. Solution जो होता है उसमें दो components या दो से ज़्यादा components होते हैं जिससे homogeneous mixture बना होता है उसको solution कहते हैं. Or you can say that if you mix more than two components to form a homogeneous mixture, that will be called a solution. For example, we have a beaker, and if we mixed two components A, B, and to form homogeneous mixture, that will be called solution. That will be called solution. So this is an example of a true solution. Each component is mixed in such a way that these components cannot be identified easily. Solution में जो components होते हैं उनको इसी तरह मिक्स किया जाता है कि उनकी जो सल्यूट और सॉल्वेंट की पहचान नहीं होती. यानी पहले दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जब उसको मिलाकर होमोजेनियस सोल्यूशन तैयार किया जाता है तो उन कंपोनेंट्स को जो हमने मिलाया होता है उनकी पहचान नहीं होती क्योंकि वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं. सिंपलेस्ट एग्जांपल इज द सॉल्ट सोल्यूशन. हमारे पास जो एग्जांपल है वो सॉल्ट सोल्यूशन है. यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. दे आर मिक्स्ड इन सच ए वे दैट दे फॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सचर. यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट में जो हम इसको मिक्स करते हैं उसको हम डिफरेंशिएट उसमें फ़र्क नहीं कर सकते क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेते हैं. इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. और ये जो पार्टिकल होते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इसको हम नेकेड आई से यानी आंखों से देख नहीं सकते. कैन से they can pass through the filter paper during filtration. ये इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाते हैं जब हम फिल्टर करते हैं उस सोल्यूशन को. दे डोंट सेटल डाउन. ये सेटल डाउन नहीं होते बॉटम में. कंटेनर का जो बॉटम होता है यहाँ पर ये सेटल डाउन नहीं होते. और इफ अलाउड टू स्टैंड फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हम इस कंटेनर को जिसमें होमोजेनियस सोल्यूशन पड़ा हुआ है ज़्यादा देर के लिए रखें तो वो जो कंपोनेंट्स है वो सेटल डाउन नहीं होते. यानी सोल्यूशन होमोजेनियस ही रहता है. So we can say that next one is colloids. What are colloids? So these are solutions in which the solute particles are larger than those present in true solution. यानी colloids जो है वो solution होता है जिसमें जो solute particles हैं वो यानी true solution से ज़्यादा होते हैं.
but not large enough to be seen with naked eye. यानी कि कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है, जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन में जो सल्यूट पार्टिकल होते हैं वो यानी कि वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं टू सोल्यूशन के मुकाबले में, लेकिन इतनी बड़े नहीं होते कि हम उसको आंखों से देख सके. तो in both cases we cannot see the particles solutions with naked eye in both true and colloidal solution. So you can say that particles that are intermediate in size between those in the solution and suspension form mixtures known as a colloidal dispersion, simply colloids. यानी कि वो पार्टिकल जो साइज में सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान में होते हैं वो एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम कोलाइडल सस्पेंशन कहते हैं या सिंपली कोलाइड्स कहते हैं. पार्टिकल बिटवीन 1 mm to 1000 particle between 1 nanometer nm 1000 nanometer in diameter waveform colloids. So it's about colloids. So these are given the examples of colloidal system from daily life. This is a fog. This is a fog. This is solution, and these are also solutions. So you can say if allowed to stand for some time, अगर हम colloidal solutions को थोड़ी देर के लिए रख लें. For example, mixture of starch and water is an example of colloidal solution. Mixture जो होता है starch और पानी का वो colloidal solution की एक example है. और बाकी example colloids के यहाँ दिए गए टेबल में which are you can say class of colloid phases. Example you can say solid dispersed in liquid. Example is paint and mud. Gel. Solid network extending throughout the liquid. Say gelatin. Liquid emulsion. Liquid dispersed in the liquid. Example is milk and mayonnaise. Foam. Foam is a class of colloidal solution. You can say this is in a phase of gas dispersed in liquid. Example is shaving cream and whipped cream. Next one is solid aerosol. Solid dispersed in gas. Example is smoke, airborne particulate matter, and auto exhaust. Liquid aerosol. Liquid dispersed in gas. Fog, mist, clouds, aerosol. Solid emulsion. You can say this is liquid dispersed in solids. Example is cheese and butter. So this is the example which is given, which says that which solvent, liquid ammonia or benzene, C6 is more likely to dissolve each of the following solutes. So we can say ये जो है अमोनिया और बेंजीन, ये इन कौन सो ये जो हमें ए बी सी ऑप्शन दिए गए तो किनके साथ मिक्स हो जाते हैं. So we can say that ammonia and benzene is more likely to dissolve in each of the following solutes. First one is water.
So we can say that water is more likely to dissolve in ammonia because both substances are polar and capable of hydrogen bonding. पानी चूंकि पोलर मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, ये अमोनिया को डिजोल्व करता है क्योंकि अमोनिया भी पोलर है. ये both substances are polar और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. नंबर बी ऑप्शन इज benzene C6H12 is more likely to dissolve in non-polar solvent. You can say that C6, this one, B is more likely to dissolve in benzene, C6, because both are non-polar. So, silver chloride is more likely to dissolve in the polar solvent. So, you can say that silver chloride is more likely to dissolve in polar solvent ammonia because silver is also polar solvent, so it can ionic compound and it can be dissolved in polar solvent, say ammonia. Next one is suspension or turbidity. Suspension is a heterogeneous mixture of undissolved particles in a given medium. Its composition is not uniform throughout. In suspension, the solute particles are large. It can be seen with naked eye. These suspended particles settle down at the bottom if left and allowed to stand for some time. For example, if we stir mud, sand in water, it mixes in water. When left for some time, a layer of particles settle down at the bottom and a clear liquid remains at the top. So the process of settling particles at the bottom is known as sedimentation. The clear liquid at the top can be decanted, poured from the top. The particles cannot pass through the filter paper and stay on paper during filtration. For example, a mixture of chalk water in is suspension. So we can say that what is suspension? Suspension जो है ये क्या होता है? ये heterogeneous mixture होता है जो undissolved particles पर मुश्तमिल होता है एक मीडियम में. इसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म थ्रोट नहीं होती. सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, तो इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं. यानी नेकेड आई मीन्स कि बगैर कोई ग्लासेस वगैरह लगा के या कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के इसको हम इसके बगैर देख सकते हैं. ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ये बैठ जाते हैं बॉटम में, और अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको रखें तो ये जो है नीचे बैठ जाते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम मट्टी रेत और पानी का मिक्सचर बना लें और उसको मिक्स करें तो ये पानी में मिक्स हो जाएगा. लेकिन अगर हम इसको सम टाइम के लिए रखेंगे तो एक लेयर ऑफ पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएगा बॉटम में, और जो क्लियर लिक्विड होगा वो उसके टॉप पे रह जाएगा. तो जो लेयर ऑफ पार्टिकल नीचे बैठ गया, इस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, इस प्रोसेस यानी सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स का जो प्रोसेस है एट द बॉटम, इसको कहते हैं sedimentation. The clear liquid at the top can be decanted on the top. Clear liquid होता है उसको हम टॉप से डिकेंट करेंगे और फिर the particles cannot pass through filter paper. तो पार्टिकल जो होते हैं फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते और पेपर फिल्टर पेपर के ऊपर ही रहते हैं.
फिल्ट्रेशन के दौरान मिसाल के तौर पर चाक और वाटर का जो मिक्सचर होते हैं वो सस्पेंशन बन जाते हैं, यानी कि टर्बिड सोल्यूशन बन जाते हैं, टर्बिड से बन जाते हैं because particles get settled down at the bottom when you kept a mixture of chalk and water for some time. So this is the example. This is suspension. And this is a clear solution. So this one is a clear solution. So this is a clear solution, you can say. And this is the suspension. So it's a muddy water. So it settled down. If you mix this one, it will form a mixture, but if you kept it for some time, then it will behave like this. The particle will settle down, and this is called suspension. And the process of settling the particles at the bottom, the process of settling down the particles at the bottom is called sedimentation. So you can say that this is the suspension turbidity of solution in solution. So beside this, other examples of suspensions are medicines such as antacid, antibiotic, and paracetamol, etc. It is necessary to shake these medicines before use. So we shake uh, we shake this some suspension in order to mix it before use, because after some time they settle down, as we have discussed. The particles settle down at the bottom. So before use, we can uh, shake the suspension. The distinctive property of solutions, colloids, and suspensions are summarized in table 6.2. So you can say that table 6.2, properties of solutions, colloids, and suspension. So homogeneous, heterogeneous, and heterogeneous. So you can say the solutions, colloids, and suspensions. So homogeneous, the particle size is 0.01 to 1 nanometer, can be atoms, ions, or molecules. Heterogeneous, which particle size 1 to 1000 nanometer, dispersed, can be aggregate or large molecules. Heterogeneous, particle size over 1000 nanometer, suspended, can be large particles or aggregate. Number 3, the homogeneous mixture don't separate on standing, and the heterogeneous mixtures don't separate also on standing. So we can say particles settle down. In heterogeneous, the particles settle down. Number 4, the homogeneous cannot be separated from by filtrations, and that of heterogeneous cannot be separated by filtration also, and can be separated. We can say that this is you can say suspensions. So in the form of suspension, it can be separated by filtrations, while the colloids, heterogeneous, can not be separated by filtration. Number 5, the solutions, homogeneous solutions, don't scatter light, while the heterogeneous colloidal solutions scatter light, Tyndall effect. Suspension, in case of heterogeneous solutions, you can say that may scatter light but are not transparent. Number 6.1, you can say that homogeneous solutions particles are small, they cannot be seen with naked eye,
while heterogeneous colloids particles are big but cannot be seen with naked eye. Similarly, heterogeneous suspension particles are big and enough to be seen with naked eye. So these are the examples we given. This is solution of table salt in water is an example of solution. So this is we can say example of solution. Well, the second one is colloids. Milk in water is an example of colloids. So this is milk in water. It's an example of colloids. And this is the suspension. Fluor in water is an example of suspension. This is you can say the fluor in water. This is an example of suspension. तो ये हमारे पास सोल्यूशन है कि ये होमोजेनस है, इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते। ये हमारे पास कोलाइड्स है, तो ये दूध को हमने पानी में डाला हुआ है, तो ये एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स है। और ये जो ना हमने आटे को पानी में डाला हुआ है, तो ये जो आटा है, यानी ये आटा हमने पानी में डाला हुआ है, लिहाजा ये example of suspension. So you can say that comparison of solutions, colloids and suspension. So these are the key points of chapter number 5. Let's discuss it. The first one is solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. Aqueous solution is that solution which is formed by dissolving a substance in water. Aqueous solution होता है जिसको हम एक सब्सटेंस को पानी में हल करने से बनाते हैं। यानी पानी में अगर हम किसी चीज़ को हल करें तो वो aqueous solution कहलाता है। Solute is that component of solutions which is present in smaller amount. Solute जो होता है, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो कंपोनेंट होता है सोल्यूशन का जो कम मिकदार में मौजूद होता है सोल्यूशन में। Solvent is that component of solutions which is present in large amount. Solvent solution का वो पार्ट है जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। Similarly, saturated solution cannot dissolve further amount of solute at a particular temperature. Saturated solution वो होता है जो मज़ीद जो है ना सल्यूट को हल करने की सलाहियत नहीं रखता एक खास टेम्परेचर पे, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो मज़ीद सॉल्यूट को हल करने की सलाहियत रखता है एक खास टेम्परेचर पे, तो उसको हम unsaturated solution कहते हैं। Supersaturated solutions contain more amount of solute than the amount required to saturate it at a particular temperature. Supersaturated solution वो होता है जिसमें ज़्यादा मिकदार में solute मौजूद होता है, यानी जो solutions को जितनी solute की मिकदार चाहिए होती है उससे ज़्यादा अगर क्वांटिटी इनसे अगर मौजूद है तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे एक खास टेम्परेचर पे। Solutions can exist in gas, liquid and solid states. On the basis, there are 9 types of solutions. Concentration of solution is a measure of the amount of solute in a given amount of solvent or solution. Concentration क्या चीज़ है? Concentration अगर हम के solution की concentration देखना चाहते हैं तो वो क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होता है उस जो इन सोल्यूशन के अंदर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट मौजूद होता है उसको हम उसके ज़रिए से हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं।
जितनी सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा उस सोल्यूशन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो जितनी सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम होगी तो सोल्यूशन भी कम कंसनट्रेशन का होगा। So we can say that the amount of solute is directly proportional to the concentration of solution. Next one is dilute solution is that solutions which contain small amount of solute dissolved in the solvent. Dilute solution वो solution होता है जिसमें solute जो है ना कम मिकदार में मौजूद होता है। Concentrated solution is that solutions which contain large amount of solute dissolved in the solvent. Concentrated solution वो solution होता है जिसमें solute की जो मिकदार होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है यानी सोल्यूशन में। परसेंटेज इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो परसेंटेज होते हैं वो नंबर ऑफ पार्ट्स जो सोल्यूट होते हैं यानी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट जो 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन यानी अगर हम सोल्यूशन के 100 पार्ट्स बना लें तो जितने पार्ट्स हो सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे तो सोल्यूशन भी उसी कंसनट्रेशन का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 पार्ट्स सोल्यूशन के हैं उनमें से 30 पार्ट सोल्यूट के हैं तो सोल्यूशन 30% होगा। वाटर इज यूनिवर्सल सोल्यूशन। वाटर एक यूनिवर्सल सोल्यूशन है। इट डिजॉल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स इट्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विद सोल्यूट पार्टिकल्स। वाटर एक यूनिवर्सल सोल्यूशन है और ये मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स को हल करता है बिकॉज इसकी जो इंट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन जो सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये मोस्टली कंपाउंड्स को हल करता है। Majority of the majority is number of moles of solute dissolved per liter of solution. Majority जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हमने लीटर सोल्यूशन में हल किए होते हैं उसको मेजॉरिटी कहते हैं। Solubility is the amount of solute in gram dissolved in 100 gram of solvent prepared saturated solution at a given temperature. Solubility जो है वो amount of solute जो हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हल करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को बनाने के लिए एक खास टेम्परेचर पे यानी एक खास टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को बनाने के लिए एक खास टेम्परेचर पे जो हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्रामों में हल करते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में तो उससे हम सॉल्युबिलिटी मालूम कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी कितनी है। यानी अगर जितना भी हल हो जाए उसके मुताबिक हम फिर उसकी सॉल्युबिलिटी का पता लगाते हैं कि कितना इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है सोल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी कितनी है। और next one is liquid solutes and solvents that are not soluble in each other are called immiscible। जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं यानी लिक्विड सॉल्यूट्स जो है और सॉल्वेंट्स जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते उनको हम immiscible कहते हैं। Liquid that dissolve freely in one another in any proportions are said to be completely miscible। लिक्विड्स जो फ्रीली एक दूसरे के साथ किसी भी तनासब से वो हल हो जाते हैं प्रोपोर्शन से किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हम इसको आपस में मिला दें लिक्विड्स को तो वो है ना अगर दूसरे से मिक्स हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये completely miscible है। Colloidal solution is that solutions which has particles that are intermediate in size between solution and suspension to form mixtures। तो colloidal solutions कौन सा solution होता है वो solution होता है जिसमें जो particles हैं वो यानी solutions और suspension के दरमियान में साइज के होते हैं यानी
particles 1 nanometer से 1000 nanometer diameter, ये colloidal suspension बनाते हैं, are simply colloids. So Tyndall effect occurs when light is scattered by colloidal particles dispersed in a transparent medium. A suspension is a heterogeneous mixture of undissolved particles in a given medium. In suspension, the particles are large. It can be seen with the naked eye. Suspension में particles जब large होते हैं तो उसको हम naked eye से देख सकते हैं. The process of settling particles at the bottom is known as sedimentation. Particles का bottom में settle हो जाना उसको हम sedimentation कहते हैं. So we can say in the next अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के वाले से इसको हल करेंगे. So we'll discuss about this exercise in next video. Say next lecture we'll discuss about this exercise and we will dissolve this whole exercise. Thanks for watching.